তামিলনাড়ুর কুর্সিতে বসেই বড় সিদ্ধান্ত নিলেন সুপারস্টার অভিনেতা ও মুখ্যমন্ত্রী থালাপতি বিজয়। মঙ্গলবার তিনি ঘোষণা করেছেন, সেখানকার মন্দির, স্কুল এবং বাসস্ট্যান্ডের 500 মিটারের মধ্যে সমস্ত সরকারি মদের দোকান অবিলম্বে বন্ধ করে দিতে হবে। আগামী 2 সপ্তাহের মধ্যে 717টি দোকান পাকাপাকিভাবে বন্ধ করতে হবে। তামিলনাড়ুর বিধানসভা নির্বাচনে জয়ের পর বিজয়ের নেতৃত্বাধীন টিভিকে সরকারের এটিই প্রথম বড় সিদ্ধান্ত। তামিলনাড়ুকে মাদকমুক্ত করার যে প্রতিশ্রুতি বিজয় দিয়েছিলেন, এটি তারই প্রথম ধাপ বলে মনে করা হচ্ছে। இந்த ஆட்சி காலத்தில் நன்மை பெற்றுள்ளார்கள் என்கிற வகையில் நம்முடைய செயல்பாடுகள் அமைய வேண்டும். இங்கே அனைவரும் சமம். ஓர் உறுப்பினரை கொண்ட கட்சிகள் இங்கே இடம் பெற்றிருந்தாலும் அவர்களுடைய கருத்துகளுக்கும் அதிக எண்ணிக்கை பெற்ற தமிழக வெற்றிக் கழக உறுப்பினர்கள் தெரிவிக்கும் கருத்துகளுக்கும் சமமாகவே மதிப்பளிக்கப்பட்டு এই ভিডিওতে প্রকাশিত সমস্ত সংবাদ এবং তথ্য বিভিন্ন সূত্রের উপর ভিত্তি করে পরিবেশন করা হয়েছে। আমাদের লক্ষ্য বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ প্রচার করা। কোনো ঘটনার দ্বারা কাউকে ব্যক্তিগতভাবে আঘাত করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়।